Very good morning, my dear students. Today we are about to start a new chapter. The chapter has already been started, and we have talked more about India, location, physiography, geography, and all that stuff. Today we are going to talk about India, location, geological structure, and physiography. What India is all about, how India looks like from the space, because now we have got satellites and different equipments to follow, and we can see the moon, we can see the Mars. The Mars rover has been sent. We have got different kind of scientific equipments, जैसे कि GPS. You have heard about GPS, global positioning system. Then different kind of satellites are there. They can tell us about the temperature, the upcoming events, just as if some kind of a hurricane is coming or some tsunami is there. So via satellite we know nowadays that the weather is going to be haywire in the next few days. So we get to know all these through the satellites. And why we are talking about satellites, that because the developed countries have created these kind of things for their own progress, and we were talking about economic development as well as economic progress. So geography is very important. Why geography is important? Because it gives us a leverage from other countries or other people to survive, as well as to expand our limits of foreign exchange. So these are the things which are really very important. You have heard about Pakistan. Pakistan is a poor country. It is in a developing mode, but still there are certain areas of Pakistan such as Baltistan, Gilgit, and these areas are rich with minerals. If these areas are rich with minerals, it means that they are going to sell these minerals and they can earn money, just as UAE did with petrol and that petroleum thing and oil. Before that, they were very poor. Then later on, when they discovered that they have got ample reserves of oil and natural gas, so they started excavating, and when they started it, they get more rich and rich. But sooner or later, it is going to get deteriorated. That is for sure. So the king of Dubai have decided that we should not survive only on the oil reserves. We should go for tourism also. So that is why he developed Dubai in such a manner. The coastline, he actually changed the whole coastal line for the sake of tourism. So they can earn money, foreign exchange. It is all about economy, developing and developed countries. So the geography plays a very important part in economy. इसका एक simple example आपको देता हूँ, that whenever we are free and we want to go somewhere and we want to enjoy ourselves, then most of the people go for mountains. Why mountains? Because the air is clear over there, the oxygen is more, the greenery is there. We've got lots of fountains, lots of waterfalls, rivers. So natural scenery beauty is there. So we want to get along with nature. That is the reason we go over there. So for these reasons and these geographical conditions, the people over there get a good amount of money through tourism, and we are the tourists. We go over there and we enjoy that feel. That is the reason. So mainly the geological structure and geography is really very important for any place. So India is a very top tourist destination. We have already talked about the first okay, let us move to the location, size and area. Geographically, India lies in the northern hemisphere. It extends up to southern part of Asian continent. The span of the mainland of India extends from 8 degree to 8.4 to 37.6 degrees north latitude and from 68.7 and 97.25 east longitudes.
The Tropic of Cancer, which is located in 23.5 north latitude and divides the country into two parts, passes through almost through the middle of the India. We have already learnt about it. Its northern part is spread more in east and west direction. The Great Plains and the Himalayan mountain system are located in this part. The area to the south of Tropic of Cancer has a triangular shape and tapers towards the south. The latitudinal as well as longitudinal extents of India are almost equal. You can say that if you talk about longitudinal as well as latitudinal, both the lengths are almost same. They have already given the length. The length between Ladakh to Kanyakumari is 3,214 kilometers, and the width from Gujarat to Arunachal Pradesh is 2,930, which is roughly, if you talk about, both are around 3,000 kilometers. There is a difference of 2 hours in the local times in the two extreme places. We have already discussed that. Then we have seen the map also. The land area of India lies in South Asia. In the north, lofty mountain ranges, lofty means big, high mountain ranges, are spread over hundreds of kilometers from east to west direction. This is why the commuting with Tibet and China is possible only through passes located at high altitudes. Bay of Bengal lies to the east, Arabian Sea to the west, and Indian Ocean to the south of peninsular India. The sea is utilized as a waterway. Even though the land routes are obstructed by surrounding mountains, India has accepted all cultural elements arriving from outside, and these have merged into Indian society. Now, strategic location of India, we have already discussed. India holds a strategic location in Eastern Hemisphere, and it has strategic importance also. India is in Eastern Hemisphere. Oceans have contributed immensely in developing mutual relations in the ancient times. Mutual relationship means दो तरफा संबंध बनाने में oceans were very important, because we have got distinctive ports. Visakhapatnam port was there, and before that Mandvi port was a very prominent port. Mandvi in Gujarat, that port was known. And before that, in the Harappan civilization, the Lothal port was extremely important. So that was the reason ancient India was doing their business. India had trade relations with East Africa, West Asia, South Asia, and Southeast Asia since ancient times. India has developed cultural and trade relations with them due to their location. No country in the Indian Ocean has a long maritime boundary, the coastal line, as India has. Due to its strategic location, the Indian Ocean is known as Indian Ocean. Location of India across the international waterways is also important. With opening of Suez Canal in 1869, the distance between India and Europe has reduced by about 7,000 kilometers. Sea routes connecting East and West, Southeast Asia and Australia to Africa and Europe pass through the Indian Ocean. The Circum-African Waterway and Suez Canal waterway pass by India, Canada and USA can be reached through the same waterway via Strait of Malacca and Pacific Ocean. India has contacts with many countries since many centuries. Goods and ideas are being exchanged since ancient times. Similarly, concepts of Upanishad, stories of Ramayana and Panchatantra, therapeutic methods just like जैसे आप देखेंगे आयुर्वेद के बहुत सारे थेरेपेटिक मेथड है, नेति है, जल नेति है, सूत्र नेति है, फिर आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग अभ्यंग, जो तेलाभ्यंग जिसे बोलते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग थेरेपेटिक मेथड्स हैं, तो एंशिएंट टाइम से वो करते हम आ रहे हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द उपनिषद्स एंड द नॉलेज वी हैव गैदर्ड. इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स एंड डेसिमल सिस्टम एटसेट्रा कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. इंडिया हैज़ एन इंपॉर्टेंट लोकेशन इन साउथ एशिया. There are 28 states, 1 national capital and 7 union territories in India. Then India has a common land boundary with Pakistan and Afghanistan in northwest, with China, Nepal, Bhutan in northeast, and with Myanmar and Bangladesh in the east. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इंडिया की कुछ बाउंड्री टच हो रही है, बहुत ही रेयर. देखो यहाँ पे इस एरिया के अंदर, लास्ट के एरिया के अंदर आप देखेंगे तो इंडिया की एक बाउंड्री टच हो रही है पाकिस्तान के साथ, और बहुत ही कम बाउंड्री टच हो रही है किसके साथ, ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं. बहुत कम लोगों को ये आइडिया है. कई लोगों को लगता है हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद अफ़गानिस्तान आता है, बट ऐसा नहीं है. कुछ बाउंड्री हम अफ़गानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं. ओके, देन आप देखेंगे तो तिब्बत है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है,
बांग्लादेश है और लास्ट के अंदर आप देखेंगे श्रीलंका है। तो इतने देशों के साथ तो हमारा कोलैबोरेशन है ही, ठीक है। इन द साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर मैरीटाइम नेबर्स, ये हमारे मैरीटाइम नेबर्स है। मैरीटाइम मीन्स समुद्र के, कोस्ट रीजन के। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea, while Andaman Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal. Okay. Indira Point, which was the southernmost point of India, was submerged in 2004 due to tsunami. With these few islands of Andaman Nicobar were also submerged into the sea. Tsunami आई थी 2004 में, तब इंदिरा पॉइंट द लास्ट पॉइंट जो था वो पानी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। अभी हमारे जो लास्ट अब देखेंगे तो कोच्चि की तरफ जाएं तो आपको नीचे की तरफ आप देखेंगे तो विवेकानंद रॉक वो लास्ट पॉइंट है इंडिया का। देन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रिस्टल मूवमेंट्स ऑफ बोथ। टेक्टोनिक मीन्स ऊपर नीचे आप देखेंगे और आगे पीछे दोनों ही होती हैं। अब इसके 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, साथ में देखेंगे। डाइवर्जेंट प्लेट्स जो अलग अलग हो रही हैं तो बीच के अंदर वैली बन जाएगी। अगला है कन्वर्जेंट प्लेट, अगर वो दोनों एक के ऊपर एक चढ़ रही है तो माउंटेन बनेंगे। एंड आगे पीछे हो रही है तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बाउंड्रीज चेंज हो जाएंगी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अंडर आवर फीट, ठीक है। द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। द क्रस्ट ऑफ अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ एस्थेनोस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे? एस्थेनोस्फीयर। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियोएक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ बाय जनरेटिंग कन्वेक्शनल करंट्स। इसके करंट्स होते हैं ऊपर नीचे, जो ऊपर की तरफ वो आगे बढ़ता है। दीज अपवर्ड करंट्स ब्रेक द अपर लेयर्स इनटू लार्ज पीसेज विच आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स। इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर की बजाय आप टेक्टोनिक याद रखो तो याद रहेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स, देर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज आर पैसिफिक प्लेट, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। दीज आर 7 important plates. Number 1 is Pacific plate, then North American plate, South American plate, Eurasian plate means Europe and Asia. It covers both of them. Then African plate, then Indo-Australian plate, Indian as well Australian plate, and Antarctic plate. These are 7 plates which are important, and these go in these kind of forms: divergent, convergent, then transforming. At some places, these plates come closer to each other, जैसे कि बताया, which are known as convergent plates. When they are coming closer to each other, then they become convergent plates. Due to divergence and convergent processes, fold and fault take place, and we call it fold as well as fall. Fold as well as fall take place. Due to the movements of these plates over millions of years, shapes of landforms as well as the locations have changed. इनके लोकेशन चेंज हुए हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन द अर्थ। अब प्लेट की वजह से ही सबसे बड़ी चीज़ है डाइवर्जेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनो भी इसकी वजह से ही बर्स्ट होते हैं, इरप्शन होता है। वेर एवर दीज ड्रिफ्टिंग प्लेट्स हैव कोलाइडेड विथ वन अनदर, इट हैज़ रिजल्टेड इन टू माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। हिमालय भी इसी तरीके के प्रोसेस से ही बना है, ठीक है। कि कैसे कह सकते हैं कि व्हेन दे रिसर्च दे गेट टू नो दैट ऑन द टॉप ऑफ हिमालय, और हिमालय के ऊपर की तरफ काफ़ी जगह उन्होंने सी क्रीचर्स के फॉसिल्स देखे हैं, यानी सी के नीचे कभी वो था और इट रोज अप, ठीक है। वेर एवर दीज प्लेट्स ड्रिफ्ट अवे, फिशर्स आर क्रिएटेड, और जब वो ड्रिफ्ट होती हैं तो अंदर वैलीज बन जाती, फिशर्स बन जाते हैं। विद इन लैंड फॉर्म्स एंड ओशंस, ओशन में भी ऐसा होता है, लैंड फॉर्म में भी ऐसा होता है। द कॉन्टिनेंट सिचुएटेड अलॉन्ग दीज फिशर्स आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट कॉन्टीन्यूसली, और वो धीरे धीरे अलग होते रहते हैं कॉन्टिनेंट्स भी। सच प्लेट्स आर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स, और जैसे इसके एग्जांपल्स है, बहुत सारी प्लेट्स अलग हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग होकर पूरा निकल गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हुआ, ठीक है। ये सारी प्लेट्स अलग हुई हैं। सच प्लेट्स आर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स, मेजर प्लेट्स। मैप में आप देखेंगे तो आपको मेजर प्लेट्स दिखाई देंगी। पैसिफिक ओशनिक प्लेट्स हैं, फिर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है पूरा का पूरा, यूरेशियन प्लेट हमको दिख रहा है यहाँ पे, देन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। हम लोग यूरेशियन प्लेट के अंदर में आते हैं, ठीक है।
India is a part of very vast and ancient landmass known as Gondwana land. This large landmass consisted of present South America. अब एक बहुत बड़ा पार्ट था जिसको प्रेजेंट साउथ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है. साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ओवर द पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स नॉर्थ, और वो नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी. इट इज़ सो बिलीव्ड दैट दिस प्लेट कोलाइडेड विद अ लार्ज यूरेशियन प्लेट बिफोर अबाउट 5 करोड़ ईयर्स. 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से वो टकराई. ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ टेथिस सी. याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, हिस्टोरिकल इवेंट है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. दे आर टेलिंग दैट ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज हुए और वो टेथिस सी में से निकले, जैसा कि मैंने बोला. लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड इन द south of the Himalayan system, wherein in the alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it. Thus, the Ganga plain between Himalayas and southern peninsula was formed. Ganga plain बनाया और हिमालय और southern peninsula form हो गया. The huge volcanic eruption took place in the northeast of the peninsular plateau, as the result of which the western portion of plateau was disintegrated and was submerged. This led to the formation of the Arabian Sea, और इससे Arabian Sea का निर्माण हुआ. Due to this submergence, the western Ghats became more distinct, और western Ghat भी वहाँ पे बने. Thus, a diversity is seen in the Indian subcontinent, और इसलिए Indian subcontinent में बहुत diversity दिखाई देती है. Lofty mountain ranges are seen in the north. Many plateaus, summits and passes are seen within them. Lofty mountains, ऊंचे ऊंचे mountain आप देखेंगे. प्लेटो, लंबे चौड़े प्लेटोज हैं, पठार जिसको बोलते हैं. समिट, ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की. पासेस मतलब दर्रे, वैलीज आर सीन विद इन देम. गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. देयर अलुवियल डिपॉजिट्स हैव फॉर्म्ड इन दिस प्लेन, और ये उनके अलुवियल डिपॉजिट से प्लेन के अंदर अलुवियल डिपॉजिट करती हैं तो वो फर्टाइल होती है. टू एजेस इन द फॉर्म ऑफ घाट्स ऑन टू साइड्स ऑफ प्लेटो एंड कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न margins. Thus, India holds a diversified physiography. इसीलिए इंडिया की जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, बहुत ही यूनिक है, और इसके जैसी डाइवर्सिटी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेट्स. एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं. दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट मैप्स. तो मैप के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझ लेना. We are talking about the location of India. So we have discussed about the longitude and the longitude as well as latitude of India, where India is in the world and how close it is with equator. When we are talking its size, what is the size from Ladakh to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh, the east and west and north and south. Then we have talked about the latitudes and longitudes and how many kilometers are there, and what are the landmass, the maritime boundary, and the sea routes from which India is doing their business from a long time, and why it is very important. And Indian Ocean, we have learnt about the Indian Ocean, then strategic location of India, and how many states are there, and the diversified states and diversified locations. Then our neighbors, we have talked about neighbors, Pakistan, Afghanistan, then China, Tibet, Nepal, Bhutan, as well as Bangladesh. And our maritime neighbors are Sri Lanka and Lakshadweep. Then we have discussed about the geological structure of the plates, the divergent plates, convergent plates, transformation boundaries, and different and distinctive boundaries of the world, and how the Himalayas came out of the Tethys Sea. We have learnt about that and why Himalaya is extremely important for us. So this chapter is all about the Indian physiography and geological conditions. Then let us talk about the activities. Go for it. Get information about the direction from your teacher and prepare a list what is situated in which direction in the house and the classroom. You can do that if you want to. Then locate yourself on the help of the internet. Yes, that can be done, and people do that. Pin करते हैं हम एक दूसरे को maps के ऊपर. Study an atlas and prepare a list of neighboring countries of India and then capital cities. That is very fascinating and very good to learn. And then know the names of the extreme points of the India in 4 directions and write them in your notebook. Extreme points that you can find on Google also, and you can go for it. So that's it for today. Learn
and understand this chapter. This chapter is completed. It is all about the maps, and I am going to send you the PDF of the maps as soon as possible, so you can go through it and you can copy it and keep it with you, so you can get good marks in final examinations. And it is your responsibility to go through the maps as well, because map is an integral part of social studies. So that's it for today. Take care, study hard.